Hello learners, in today's video we are going to talk about beginning of colonialism. So first we will understand what is colonialism. Colonialism means when a powerful country goes to another land, rules over it, control its people and uses its resources. So colonialism is basically a thing जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है, ओके, उसको रूल करती है, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करती है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, ओके, विदाउट गिविंग दोज पीपल those country any benefit. But it was not only political or economical, it was also cultural and literary. Through language, books and stories, colonizers made themselves look superior and showed that colonized people are weak or uncivilized. So the rule and control is not just economical or political. ये जो कंट्रोल colonizers colonized लोगों पे करते थे, colonized country पे करते थे, it was also cultural based and literary based. Because जब colonizers किसी कंट्री पे रूल कर रहे होते थे तो वो वहाँ की लैंग्वेज, बुक्स, स्टोरीज़, इवन colonizers जो थे उनको यूज़ करते थे to make themselves look superior, okay, and make those colonized people weak and even uncivilized, okay. So the beginning of colonization is the age of discovery, which is 15 to 16th century, ठीक है. इस एज को हम colonization की beginning मानते हैं because यही वो एज थी जब यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक स्पेन, Portugal, England, France and the Netherlands started traveling to Asia, Africa and America. Okay, और इस traveling के दौरान, through traveling all these countries, they first came for trade but also slowly captured land and ruled them. तो पहली बार जब ये उस कंट्री में पहुँचे, नई कंट्रीज़ में पहुँचे, तो दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, ओके, बट स्लोली वो वहाँ पे रूल करने लगे एंड वहाँ की चीज़ों को कंट्रोल कर लिया. England entered late but became the most powerful colonial empire in the 18th and 19th century, which you know very well because being an Indian and being colonized by British government, वी नो दैट कि इंग्लैंड जो है वो लेट में आया है कोलोनाइजेशन के फील्ड में, बट उनका जो एम्पायर था, कॉलोनियल एम्पायर जो था, इट बिकेम द मोस्ट एम्पावर colonial empire in the world, okay, during 18th and 19th century. Now we come to the role of literature in colonialism, because in this part we will see how colonizers uses literature against colonized people and colonized country. So first point is literature as a propaganda for empire, okay. So literature presented colonial expansion as a noble mission, not exploitation but a civilizing mission. So literature में उन्होंने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया है like they are on a mission to civilize other. वो इस तरीके से खुद को पोर्ट्रेट नहीं कर रहे हैं अपने लिटरेचर पार्ट में कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे दूसरी कंट्री को जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, जहाँ की चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे थे. इवन उन्होंने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि वो वहाँ के लोगों को सिविलाइज कर रहे थे एंड दे आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन. पोएम्स, प्लेज, novels and essays celebrated the empire and encouraged people in Europe to support it. ये सारी जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, दे सेलिब्रेटेड देम, ओके, their literature forms celebrated all these and glorify all the colonized things. and even ये जो लिटरेचर थी, उनकी जो लिटरेचर थी, इसने काफ़ी हद तक सपोर्टिव व्यू दिया है, ओके. रुडयार्ड किपलिंग poem The White Man's Burden 1899 describe colonization as a duty of European to educate and civilized non-European. Can you see this? रुडयार्ड किपलिंग की जो पोएम है
The White Man Burdens. It tell you about कि how colonization जो है वो ड्यूटी थी यूरोपियंस की कि वो हर जगह पे जाएं, वहाँ के लोगों पे रूल करें, उनको कंट्रोल करें और उनको सिविलाइज करें, उनको एजुकेट करें, बिकॉज जो नॉन यूरोपियन लोग थे दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ और civilized इनफ. Next point we have creating image of the colonized. Colonized people were often sold as savage, lazy, backward, exotic, or childlike. These stereotypes made it seem natural that Europeans should rule them. So इन्होंने अपनी ही इमेज एक नहीं बनाई थी थ्रू लिटरेचर. दे हैव ऑल्सो मेड अ डिफरेंट इमेज ऑफ colonized people. उनका एक इमेज इन्होंने बनाया था लाइक एज अ सैविज, लेजी, बैकवर्ड, एग्जॉटिक एंड चाइल्ड लाइक. ओके. और इन्होंने अपने लिटरेचर में ऐसा स्टेरियोटाइप बना दिया था colonized पीपल का कि इट इज़ वेरी नेचुरल कि यूरोपियन जाके उनको रूल करे बिकॉज दे डिज़र्व दैट. थर्ड पॉइंट, spreading English language and culture. Colonial power used literature as education. English books, poems, and plays were taught in colonial to make colonized people admire European culture. इन्होंने अपना लैंग्वेज और अपने कल्चर को वहाँ के एजुकेशन में जहाँ भी जिस भी जगह को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, रूल किया हुआ था, वहाँ के लिटरेचर में, एजुकेशन में अपने लिटरेचर को इन्होंने इंक्लूड किया ताकि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है वो इस चीज़ को पढ़ें, इनकी बुक्स, इनकी पोएम, इनकी प्लेस को पढ़ें और वो यूरोपियन कल्चर को एडमायर करें, उसको फॉलो करना स्टार्ट करें. दे गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम यूरोपियन कल्चर. In India, Thomas Mackley Minute on Education 1835 argued that English literature would create Indians who were Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in moral and in intellect. सो यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ थॉमस मैकले जब उन्होंने मिनट ऑन एजुकेशन का अपना स्पीच दिया था इन 1835. उन्होंने ये लाइन बोली थी कि ही वांट इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इन टेस्ट द इंडियन शुड बी इंग्लिश, इन ओपिनियन द इंडियन शुड बी इंग्लिश, इन मोरल द इंडियन शुड बी इंग्लिश एंड इन इंटेलेक्ट द इंडियन शुड बी इन इंग्लिश. ओके. शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, इन लोगों को पढ़ाया जाता था इंडियन स्टूडेंट को ताकि वो इंग्लिश कल्चर को वैल्यू दें, उसकी रिस्पेक्ट करें एंड इवन उससे इन्फ्लुएंस हो. कंट्रोलिंग इमेजिनेशन एंड नॉलेज. लिटरेचर shaped how colonizers imagined the world. Travel books and even adventure novels describe colonies as mysterious land full of rich waiting to be discovered. So you can see कि उन्होंने लिटरेचर में इतना कुछ गलत लिख दिया था कि colonizers को एक अलग ही तरीके से इमेजिन किया जा रहा था. लाइक उनके जो ट्रैवल बुक्स थे, एडवेंचर बुक्स थे, उनमें colonizers को एज अ मिस्टीरियस लैंड डिस्क्राइब किया गया था जिसको डिस्कवर करने के लिए इनकी ज़रूरत थी, जिसको डिस्कवर होने के लिए इनकी ज़रूरत थी. एंड दे आर द वन हु जिन्होंने एहसान किया है उन पे उनको डिस्कवर करके. लेजिटमाइजिंग पावर एंड अथॉरिटी. Literature gave moral justification to colonization by presenting as a beneficial, and colonizer were portrayed as a hero, savior and guide. So they uses their power and authority to kind of manipulate literature and उसके थ्रू उन्होंने एक moral justification create किया about colonization, that how colonization is very beneficial for both of the party, colonizers and colonized people. And they portrayed themselves as a hero, savior and guide. Now we come to the early colonial text in English literature. So the first point is travel writing and exploration narrative, in which we have Christopher Columbus' letter 1435, in which he gave the first description of New World. Then we have Richard Harclute Principal Navigation 1589, which is a collection of travel account promoting English exploration. Then we have Sir Walter Ralph
the discovery of Guyana, 1596, which gave the exotic description of South America. In poetry and imperial imagination, we have Edmund Spenser's A View of the Present State of Ireland, 1596, which is a colonial description of Ireland as barbaric, needing control. Then we have John Milton Paradise Lost, 1667, which is often linked to colonial idea of expansion and conquest. In drama and colonial agency, we have Shakespeare, The Tempest, 1611. In Tempest, जो इसमें कैरेक्टर है Prospero and Caliban का, which very much similar to जैसे कि Prospero जो है which is who is shown as colonizer, and Caliban is very much shown as a colonized subject, which shows how the domination, resistance, and clash of culture is present at that time of society. Then we have early colonial novel like Daniel Defoe's Robinson Crusoe, 1719, which considered the first colonial novel, shows survival, mastery, and the control of Friday, the natives. If we see the role of literature in colonialism in India, because we are Indian and we are ought to know about the colonialism literature in India. So the first point is that they uses English literature as the tool of power. British uses literature to spread the idea that their culture was superior, which was the only propaganda of British. They want to show them as a superior. तो उन्होंने लिटरेचर को यूज़ किया टू स्प्रेड द आइडिया लोगों के बीच में कि वो सुपीरियर है सबसे. Indian society represented as inferior. Colonial writing often described Indian as superstitious, backward and weak. Indian को superstitious, backward और weak describe करा है इन लोगों ने अपने literature में. Missionary writings, many missionaries use English to spread Christianity and Western moral values. Many missionary writing you can see कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए दे यूजेस इंग्लिश and they uses Western moral values. What are the Indian responses to colonial through literature? At first, Indian literature imitated English style. Later, they began to resist colonialism by using language English to express Indian identity. So पहले उन्होंने English style English language को बहुत resist करा है, लेकिन बाद में उन्होंने इसी चीज़ को English language को imitate करा है. Then they started using English language to resist colonialism and to show and to express Indian identity. And these are some famous writers which you can see here. The first one is Raja Ram Mohan Roy, जिन्होंने एडवोकेट करा था इंग्लिश एजुकेशन को, but he also fought for Indian reforms. Then we have Bankim Chandra Chatterjee, who wrote Anand Mat in 1882, which inspired nationalism. Then we have Rabindranath Tagore, who criticized colonialism but used English to reach global readers, of course, to represent Indian. Then we have Raja Rao, R.K. Narayan and Mulk Raj Anand, who are the early Indian novelists in English, and they blend Indian themes with the English language. If we see the post-colonial perspective of all these writers, then we can see the later critic like Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, who explain how colonialism in India worked through language and literature. Because these writers, Raja Ram Mohan Roy, Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Raja Rao, R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, these are the writers जो अपने literature को use कर रहे थे ताकि वो इंडियन की जो इमेज बाहर बनी हुई थी colonizers की वजह से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे. But when these critiques came to the literature like Edward Said, होमी के बाबा, गायत्री स्पिवाक, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि कैसे लैंग्वेज और लिटरेचर को यूज़ किया है टू कोलोनाइज्ड पीपल्स माइंड.
So they gave some terms like Orientalism, which is about British represented Indian as mystical, irrational and inferior. Okay. Then we have hegemony, which shows the control was not only through force but also through culture and education. Lastly, we have post colonial literature, which after independence, Indian writers like Salman Rushdie, Arundhati Roy, Amitav Ghosh rewrote history from the Indian point of view. So, so all these writers like modern writers, critiques, and all these Raja Ram Mohan Roy, Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Mulk Raj Anand, इन सबका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है टू यू नो टू टू रिफॉर्म आवर आइडेंटिटी, और जो कि कॉलोनाइजर्स की वजह से हमारी जो आइडेंटिटी बन गई थी लिटरेचर में, दे आर द वन जिन्होंने हमारी आइडेंटिटी को चेंज करा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ colonialism. If you have any doubt, any query about this topic or any particular topic, you can comment below, and have a nice day.